Hello everyone. Welcome to Cyfrin Updraft. My name is Ghulam Rasool and I am an ambassador here at Cyfrin Updraft, and it's the part 3 for the Solidity one-on-one session. और आज का ये सेशन जो है प्योर एंड शुद्ध हिंदी में रहेगा, तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर्स हम जो है हिंदी में सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। और दिस इज़ मतलब ये सेशन जो है मेनली बिगिनर्स फोकस्ड रहेगा। अगर सॉलिडिटी आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है बिल्कुल बेसिक से जाते हुए एक बहुत अच्छे एडवांस लेवल पे अपनी सॉलिडिटी की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे एंड ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू गाइस। Yeah, so I think it's visible. Hello. I am at the doctor. No problem. Do we need to do anything? No, I am at the doctor, but I will join in soon. No problem. You can take your time and join as soon as possible. Is my screen visible? Yeah, perfect. So सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर जो है बेसिकली सॉलिडिटी पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ बिट मोर फ्रॉम बिगिनर लेवल एंड हम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप ये वाला कोर्स ब्लॉकचेन बेसिक्स जो है, अगर आप ये सेशन से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको हिंदी आपकी मेन लैंग्वेज है एंड इंग्लिश में थोड़ी-सी आपको परेशानी है, तो नो वरीज़, हम थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे। और अभी चलिए अपन सॉलिडिटी क्या है वो देखते हैं पहले तो। सो या सॉलिडिटी वन ऑन वन इन हिंदी पावर्ड बाय साइफरिन अपड्राफ्ट। सो आज हम ये सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं सॉलिडिटी के। हम देखेंगे लाइसेंसेस और सॉलिडिटी वर्जन्स के बारे में, देन वेरिएबल्स, डेटा लोकेशंस कैसा वर्क करते हैं, फंक्शंस, विजिबिलिटी, देन रीड ओनली फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्ट देखेंगे, एरे देखेंगे, मैपिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स। साथ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसका नाम है मार्कशीट। मतलब उसमें थोड़े से हम यही कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर कर वो प्रोजेक्ट को जो है हम बनाने वाले हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन मेरे लिए तो आई एम वेटिंग, सो प्लीज़ लेट मी नो व्हेन वी कैन स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली पहले थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन के रिलेटेड। पहले तो आपके पास ये लिंक होना चाहिए, ये गिटहब रिपॉजिटरी का, जहाँ पर पैट्रिक कोलिंस ने जो है सॉलिडिटी का कंप्लीट कोर्स बनाया है। उसके लिए ये गिटहब रिपॉजिटरी बहुत ही ज़रूरी है। सो इसका लिंक मैं आप लोग तक शेयर कर देता हूँ यूजिंग यूट्यूब। 1 मिनट। सो इट्स लाइक रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो भी इस सेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ओके, हियर इज़ द गिटहब। ओके, सो हियर इज़ द गिटहब एंड लेट मी शेयर अनदर वंस। ओके, तो परफेक्ट। सो आप जाकर ये रिपॉजिटरी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल दिया गया है। बट या सो आप ये गिटहब रिपॉजिटरी को एक टैब में ओपन कर कर ही रखिए, ताकि जब हम साथ में प्रैक्टिस करें और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती हो देन यू कैन यूज़ दिस गिटहब रिपॉजिटरी, द लिंक्स, द टूल्स एंड एवरीथिंग। एंड सेकंड चीज़, नॉट ओनली दिस, बट अगर आप सॉलिडिटी सीखना चाहते हो तो आपको जो है एआई के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। चैट जीपीटी और फाइंड, 2 एआई से जिसको मैं कंफर्टेबली यूज़ कर सकता हूँ एंड आई रिकमेंड बोथ ऑफ देम टू यू। एंड या और एक
जो है इथेरियम का स्टैक एक्सचेंज, जहाँ पर आप अपने सवाल जो है डालकर उनके आंसर्स ले सकते हो, लाइक व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग, एंड यू कैन गो you can get answers to them. Like it works as a stack exchange, but it's in the Ethereum side, so it's ethereum.stackexchange.com. So let me share this in the comment. Okay. Okay, perfect. Now let's see. एंड जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम एक-एक चीज़ देखते जाने वाले हैं, बट चलिए अभी शुरू करते हैं सॉलिडिटी को। सो सॉलिडिटी को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ईवीएम होते क्या हैं। सो ईवीएम स्टैंड्स फॉर इथेरियम वर्चुअल मशीन। इट्स लाइक कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, और जो इथेरियम के ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, लाइक नोड्स यूज़ करके, ठीक है? और डिसेंट्रलाइज़्ड कंप्यूटिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जो वर्चुअल मशीन्स इथेरियम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम ईवीएम्स कहते हैं, एंड वो हमें हेल्प करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए और ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इथेरियम क्या है। आई होप यू गाइस नो। Okay, then what is Solidity? Solidity is a high level object oriented programming language designed for writing smart contract, and it's run on Ethereum blockchain. That's the main reason that we use Solidity to write smart contracts, because we are working on when we work on Ethereum virtual machines, we need to use Solidity or Viper. So Solidity is a good one to start अगर आपका prior experience JavaScript में है, या फिर अगर आप कोई अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हो, सो देन सॉलिडिटी विल बी मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब आप उसको आराम से सीख सकते हो, और उसका सिंटैक्स जो है कंपैरेटिवली सिमिलर होता है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है? और अभी बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। लाइक जो भी ट्रांजैक्शंस हम करंट वर्ल्ड में करते हैं, दैट एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस। लाइक आपने प्रॉमिस किया है कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि आप एवरी मंथ जो है इंटरनेट का बिल भरेंगे, एंड देन उसके लिए आपको बिल पे करना पड़ता है, देन यू कैन यूज़ द इंटरनेट। सो सिमिलरली हर चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलती है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट्स में लेजिटिमेसी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसी के लिए, एज वी गाइस नो, कि ब्लॉकचेन इज़ अ वेरी ट्रस्टेड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमें हेल्प करते हैं कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम ब्लॉकचेन पे सिक्योरली रन कर पाएँ, एंड एवरीथिंग इज़ बीन रिकॉर्डेड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है डिप्लॉय करते हो। तो इट इज़ लाइक a contract is decided initially, then you need to sign that contract, and yeah, everything will be taken by the स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इज़ नो नॉट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पर्सन। सो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिडिटी के लिए हम आईडी कौन सा यूज़ करने वाले हैं। लाइक वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हम अलग अलग आईडीज यूज़ करते हैं, लाइक वी यूज़ VS कोड, पाइचार्म एक्सेट्रा। फॉर इथेरियम सॉरी फॉर सॉलिडिटी वी आर गोइंग टू यूज़ remix डॉट ethereum डॉट org। सो रिमिक्स जो है एक आईडीई है जो इथेरियम द्वारा बनाया गया है, एंड इसी पे हम जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे सॉलिडिटी के थ्रू, एंड कंपाइलर भी इसी में होगा, और एक छोटा मोटा डिप्लॉयमेंट टूल भी हमें इसमें मिलता है। ओके, एंड ये रहा इथेरियम का इंटरफेस। सो हियर इज़ द कंपाइलर, और ये जो है डिप्लॉयमेंट के लिए है। दिस ऑप्शन इज़ फॉर डिप्लॉयमेंट, दिस इज़ द कंपाइलर, एंड हियर आर ऑल द फाइल्स that is that is already provided by remix. So let me delete them one by one, and this is the fresh remix page। like बिल्कुल अगर आप बिगिनर भी हो तो आप जैसे स्टार्ट करोगे, आई थिंक आपको भी ऐसा कुछ इंटरफेस दिखना चाहिए। सो या चलिए फाइल्स डिलीट हो गए, एंड यहाँ पर एक रिमिक्स का एआई भी है, बट या सो ये ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फाइल कहकर कह रहा है, एंड when you click that you can create a new file name my contract maybe। ओके, एंड यहाँ पर my contract डॉट SOL ये डिटरमाइन करता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी के थ्रू लिखा जा रहा है। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है लाइसेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो लाइसेंसेस होते क्या है वो समझ लेते हैं पहले। सो
लाइसेंसेस बेसिकली बताते हैं कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कोड आप लिख रहे हो वो कौन यूज़ कर सकता है, ठीक है? और बहुत प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं, एमआईटी, जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस, एनबीएसडी 3 क्लाउड लाइसेंस, अनलाइसेंस्ड भी होता है बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने कोड को अनलाइसेंस्ड रखो। द मोस्टली सजेस्टेड लाइसेंस इज़ एमआईटी, ठीक है? सो लेट मी ज़ूम इन अ बिट सो दैट यू गाइस कैन सी। ओके, परफेक्ट। एसपी एसपीडीएक्स license identifier MIT। सो या हियर वी गो। सो हमने जो है अपने इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी इस वाले कोड का जो है लाइसेंस जो है MIT रखा है, विच इज़ एन ओपन सोर्स लाइसेंस। एंड ये था लाइसेंसिंग, लाइसेंस कैसे आप इस्तेमाल करते हो उसके बारे में। देन यू कैन ऐड लाइसेंस बाय यूजिंग this command spdx license identifier, and after that you need to put a colon and provide what kind of license this code is using, I mean the smart contract is using। then उसके बाद आते हैं हम solidity versioning पे। so solidity versioning जो है, it's like the version that your code is using for of solidity। अभी का latest version की बात करें तो it's 0.8.29 and yeah it's the latest version of solidity। so solidity का version define करने के लिए आपको पहले लिखना चाहिए pragma solidity, then your solidity version 0.8.16 or maybe 26। हाँ, इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ सॉलिडिटी वर्जन। बट यहाँ पर थोड़े से और मेथड्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हो सॉलिडिटी। लाइक आप यहाँ पर देखो, परागमा सॉलिडिटी डायरेक्ट वर्जन नेम 0.8.26। देन सेकेंड थिंग इज परागमा सॉलिडिटी 0.8.12। सो इट्स लाइक जब आप ये अपर एरो यूज करते हो तो इट रिप्रेजेंट्स के एनी वर्जन अबाउ दिस। लाइक इन फ्यूचर अगर अपडेट्स भी आएंगे तो अवर कंपाइलर विल अपडेट इट ऑटोमेटिकली। so let's add this thing। yeah, so this one is the recommended one to use, but there is another one, like you can specify like the version should be greater or equal to 0.8.4 but lesser than 0.8.28। but yeah it depends, वरना आप इसको बहुत एडवांस लेवल पर लेकर जाओगे and your code will only learning only work in that conditions, तो वहाँ पर ये जो है यूज में आएगा। बट जनरली आई रिकमेंड कि आप जो है यही वाला मेथड यूज करें कि एनी वर्जन अबाउ 0.8.26। सो ये था, हमने सॉलिडिटी को जो है हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। देन वी कैन सिंपली गो एंड क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम जो है हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है हम जैसा CSS में क्लास क्रिएट करते हैं वैसे ही हम जो है कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए क्रिएट करते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो वी कैन क्रिएट इट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, okay, and let's name it my contract, then curly braces दो। and यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे that will be our code, your code goes here। और ये कोड जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के इनसाइड जो आप कोड लिखने वाले हैं that goes here। okay, so here is my contract। then कॉन्ट्रैक्ट तो हमने ऐसे क्रिएट कर लिया है कि पहले हमें लिखना है कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक नाम देना है, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड जाएगा दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड चेकआउट करते हैं वेरिएबल्स। सो जो सॉलिडिटी है उसमें अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं लाइक यूएंट, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, एड्रेस। सो ये रिप्रेजेंट क्या डेटा टाइप को करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहली चीज़ यूनिट, यूइंट सॉरी, यूइंट स्टैंड फॉर अनसाइंड इंटीजर्स, दैट मीन्स दे कैन ओनली कंटेन अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, like they can contain the numbers but only the positive numbers। and second one is int, that means integer, and they can contain all the values from negative to positive। so yeah, from negative values to positive values, like can contain the numbers। so या देन उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग होता है, एड्रेस होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यूएंट जो है ओनली पॉजिटिव नंबर्स जो है कंटेन करता है, और इंटीजर्स जो है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड बूलियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप विच यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स फॉर अ कंडीशन। एंड स्ट्रिंग जो है आपके जनरल वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज अंडर कोटेशंस। एंड उसके बाद
एड्रेस जो है आपका वॉलेट एड्रेस हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो सकता है. इट्स बेसिकली अ 42 डिजिट कोड एंड स्टार्टिंग विद 0 एंड x. सो या दिस आर द वेरिएबल्स. देन हम जो है एक-एक वेरिएबल बनाकर देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पर पहले हम डिफाइन करते हैं uint 256. हाउ दिस थिंग वर्क्स. सो 34 and let's name it as my number. So it's like unit 256 एक वेरिएबल है और उसका नाम my number है and that is 34. So yeah, it works like that. and अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करेंगे, एक मिनट में यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. लाइक इफ़ आई चेंज इट टू 0.2.19 मे बी, हाँ 0.8.19, देन जो है यहाँ पर एक रेड एरर आ रहा है. दिस इज़ बिकॉज जो हमारा करंट कंपाइलर है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस वर्जन ऑफ सॉलिडिटी. सो हमें यहाँ पर इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा. लाइक हमें यहाँ पर 0.8.19 अगर हम सिलेक्ट करते हैं, सो देन दिस एरर शुड गो, प्रॉबेबली इट शुड गो. एंड यहाँ पर आप जो है अगर ये चेक बॉक्स को टिक करते हो, सो दैट मीन्स कि आपका कोड जो है ऑटो कंपाइल हो जाता है. लाइक यू डोंट नीड टू रिकम्पाइल द कोड अगेन एंड अगेन, बट या यू कैन चेक इट ऑन इफ़ यू वांट. देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने जो है 0.8.19 पर सॉलिडिटी वर्जन को अपडेट कर लिया है. बट या अगर हम इसके ऊपर लगते हैं तो आप देखिए ये वही वर्जन यूज़ कर रहा है and it will update accordingly. So here is the unit 256, my number, and it's 34, and let's add an integer. So okay, and इसको my integer कहकर भी सेव कर सकते हो. And you can store a negative value, maybe 34 or maybe 245. okay, and then उसके बाद we can use, like यहाँ पर देख सकते हो आप, boolean हम यूज़ कर सकते हैं. okay, boolean my bool. So it can store a value like true and yeah semicolon. So auto complete को मैं ऑफ कर देता हूँ because it's auto completing my code. beginners के लिए suggested नहीं है कि आप auto completers का यूज़ करो, but yeah. So this is how boolean works. Then string and addresses भी हम करेंगे. So let's add string and let's name it my name and it will store a value and you need to add. Perfect. This is how string works. Then you can store an address. Address भी आप store कर सकते हो. My address maybe. हाँ. Then उसके बाद let's take a demo address, maybe this one. Okay, 1 minute. So you can add anything like 0x से शुरू कर आप 42 लेटर्स डाल सकते हो. वॉलेट एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो, बट वी विल लुक फॉर एड्रेस व्हेन वी गो अहेड, व्हेन वी प्रोसीड अहेड. अभी के लिए हम डिप्लॉयमेंट नहीं, बस सॉलिडिटी सीख रहे हैं. देन व्हेन वी गो टू द डिप्लॉयमेंट, एट दैट टाइम हम देख पाएंगे कि एड्रेसेस कैसे काम करते हैं एक्चुअल में. सो या एंड यहाँ तक अगर आपके कुछ क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क. Hi guys, hello, great, we're awesome, waiting was worth that. Any questions for me? कुछ सवाल अगर आपको है सो यू कैन फील फ्री टू आस्क. या इट्स बेसिकली हैश. लाइक इथेरियम जो है अपना एड्रेस जो है 0x से शुरू करता है. इट्स अ 42 characters based address which we use. And let me add MetaMask. Okay, so let's go ahead. These are the variables. Then here are the storage types. So yeah, storage वर्क कैसा करता है हमें ये देखना होगा. okay, and अगर का कोई कमेंट.
चलिए, I don't think there are more comments. Okay, so let's get started. Okay, sorry, and let's get started. So अभी ये 256 वर्क कैसा करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ. इट्स लाइक यूनिट 8 भी होता है. ओके, 256. सो ये वर्क कैसा करता है, 2 की पावर जो भी नंबर आप यहाँ पर देखोगे, दैट नंबर -1. इट्स लाइक 2 to the power 8 minus 1. So this is the amount of characters that you can use. For example, if I try to store a number like maybe 344, and let's write a function to call this number. Excuse me. Function get number unit 8. Okay, sorry, we are calling it public view returns. देखिए ये एरर कह रहा है बिकॉज यूनिट 8 कैन ओनली स्टोर up to 255 characters. Extremely sorry guys. And yeah, 1 minute. Excuse me, Alif. Hello, Alif, are you here? I'm here. Can I get a 5-minute break, please? Yeah, of course. It is your call. Okay, sorry. No problem. Shit. Hello everyone, sorry for that delay, but yeah, I was getting continuous sneezes. Extremely sorry for that. But yeah, let's continue. चलिए कंटिन्यू करते हैं. एंड यहाँ पर जो है हमने एक फंक्शन लिखा है कि गेट नंबर, एंड यूनिट 8 जो है सिर्फ 255 तक ही एक्सेप्ट कर सकता है. इफ़ आई चेंज टू 255 देन सी द कंपाइलर इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन. एंड अगर हम इसे डिप्लॉय करते हैं, और ये डिप्लॉय में इंटरफेस में आप ये चीज़ देख लीजिए, पहले रिमिक्स वीएम कैनन यूज़ कीजिए एंड यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स. ओके, एंड देन जो है एस्टिमेटेड गैस वगैरह हम आगे देखेंगे. इफ़ आई डिलीट द रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्लॉय अ न्यू वन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी डिप्लॉय किया है. देन अगर यहाँ पर जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है गेट नंबर, इफ आई क्लिक दैट आई कैन गेट 255. बट इफ आई इंक्रीज इट बाय 1 लाइक 256, it is not going, the compiler is showing the error like type error
256 is not implicitly convertible to expected type unit 8. So यूनिट 8 सिर्फ 255 तक नंबर्स कंटेन कर सकता है, बिकॉज 2 टू द पावर 8 इज 256 एंड देन -1 इज 255. सो अगर हमें लार्ज नंबर्स के साथ जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कंटिन्यू करने हैं, सो देन वी कैन टेक इट एज 256, देन इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन. और यहाँ पर हमने जो रिटर्न फंक्शन है उसको भी हमने जो है 256 कर देना है. परफेक्ट, देखिए अभी अब परफेक्टली कंपाइल हो चुका है. देन लेट्स डिप्लॉय इट अगेन. And yeah, here is the deployment part. Get number and you can get 256 as my numbers value. So this thing work like this. And चलिए अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं. और अगर हम स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे तो हमें जो है मेमोरी एंड स्टोरेज कॉल डाटा कैसे वर्क करता है, वी कैन गेट टू नो इट मच ईजियर. अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है, सो या any questions for me? ओके चलिए, सो अभी देखते हैं. y-1, या सो इट्स अ रूल. मतलब बेसिकली अगर आप 8 डिजिट लिखते हो लाइक यूनिट 8, सो देन it's 2 to the power 8 then -1. Okay, and this is how uint 256 works. So if you want you can add integer strings with the same method. Like एक integer add कर देख लेते हैं, my number, and इसकी वैल्यू चेंज कर लिख देते हैं -56 maybe, and yeah, so it will work perfectly fine. So basically जो स्टोरेज होती है ब्लॉकचेन पे, जो आपका डेटा स्टोर होता है, दैट इज इनटू द 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज मेमोरी, द टेम्पररी डेटा लोकेशन यूज ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन. एंड जो वेरिएबल स्टोर होता है मेमोरी में, दैट एक्सिस्ट ओनली फॉर सर्टेन टाइम पीरियड and after that it will be get erased. So yeah, memory is useful for handling dynamic data structures like arrays when changes don't need to be stored permanently. So और memory जो है गैस efficient भी होता है, like it will cost you less gas when कंपेयर टू स्टोरेज जो है थोड़ी सी ज़्यादा गैस कॉस्ट करता है, बट आप जो है मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो. मेमोरी इज़ द बेस्ट वन टू यूज़, बट इट डजंट स्टोर्स योर डेटा परमानेंटली ऑन द ब्लॉकचेन. मेमोरी आप तभी यूज़ करना तब आपका डेटा जो है टेम्पररी अगर आप ब्लॉकचेन पर स्टोर कराना चाहते हो, सो देन यू कैन यूज़ मेमोरी. एंड स्टोरेज इज़ द परमानेंट डेटा लोकेशन यूज फॉर स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है. एंड सिंस राइटिंग टू स्टोरेज इज़ मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ गैस कॉस्ट, या तो अगर आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर इट शुड बी एफिशिएंट. एंड वो कैसे करना है हम आगे देखेंगे. एंड कॉल डेटा इज़ एन इम्यूटेबल टेम्पररी डेटा लोकेशन, जो फंक्शन आर्गुमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ वी वांट टू प्रोवाइड सर्टेन इनपुट फॉर अ फंक्शन देन वी यूज़ कॉल डेटा. जैसे कि आप रिमिक्स में देख सकते हो, यहाँ पर कॉल डेटा कहकर एक ऑप्शन होगा, ताकि हम जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है कॉल डेटा इंसर्ट कर पाए, ट्रांजैक्ट कर पाएँ. दैट्स वाई वी यूज़ कॉल डेटा देयर. एंड आगे बढ़ते हैं. एंड फंक्शंस, या तो फंक्शन जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लाइक it's basically function is basically a thing that allows certain that works when a certain conditions happen. Like यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन नेम हमने क्रिएट किया है set value कहकर, जहाँ पर हम जो है एक हमने अपना वेरिएबल क्रिएट किया है अनसाइड इंटीजर का my value कहकर, और हम यूज़र से इनपुट लेकर उसे अपडेट कर रहे हैं. ठीक है. सो इट वर्क्स लाइक दैट. और फंक्शन मैंने अभी आपको क्रिएट कर भी बताया, बट एक और बार मैं आपको जो है फंक्शन क्रिएट कर बता देता हूँ. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन दैट विल टेक इनपुट फ्रॉम अस एंड गिव अस एन आउटपुट. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन.
Okay, and let's name the function add number. Okay, and ब्रैकेट्स में हमें कंडीशन लिखनी है लाइक वी वांट अ यूनिट 256 सॉरी integer 256 एज एन इनपुट. सो हम नंबर को अंडरस्कोर नम डालकर हम इनपुट लेने वाले हैं एंड इट्स अ पब्लिक फंक्शन. हम आगे जाकर बात करेंगे कि पब्लिक फंक्शन क्या होता है. देन करली ब्रेसेस में हम यहाँ पर डालेंगे कि जो हमारा वेरिएबल इंटीजर 256 है अपडेट दैट विथ the input we get from the user which is underscore num. Okay, and it's compiled. Let's go and deploy this thing. So okay, so let's add a number here, minus 45, add number. Okay, and as you can see here, from this contract address to this contract address a number has been sent. आप टर्मिनल पर देख सकते हो कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है, like how much gas it has been used to call this function and execution cost. Okay, so you can use this terminal window to check what is going on at the time of deployment. Okay, और अभी हमें मालूम करना है कि एक्चुअली यही वैल्यू जो हमने -45 एंटर की है दैट इज इनसाइड आवर वेरिएबल इंटीजर 256 और नॉट. सो उसके लिए हम एक अनदर व्यू फंक्शन बनाएंगे. ओके, जो कि हमें जो है नंबर जो है ऐड कर देगा. Okay, integer 256. Oh sorry, so it's basically a view function, so we don't require any kind of input. Okay, public view returns, और हम जो है इंटीजर को रिटर्न करा रहे हैं. लाइक हमें इंटीजर देखना है, सो इंटीजर 256. Perfect, and then let's add the curly braces and let's return our updated variable my num. That's it. चलिए अभी डिप्लॉय कर देखते हैं. पहले ऐड करते हैं नंबर -34. लेट्स ऐड इट एंड लेट्स गेट द नंबर. सी इट्स डिस्प्लेइंग -34. ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर ऐड करेंगे, लाइक मे बी वी कैन ऐड 89 -89, अगर हम इसको ऐड करते हैं देन अगेन हम इसको वेरिएबल को व्यू करेंगे देन इट्स शोइंग -89. सो या ये चीज़ जो है ऐसे काम करती है. लाइक हमने बेसिकली ये प्रोग्राम में क्या किया है, पहले हमने जो एक वेरिएबल बनाया इंटीजर 256 और वेरिएबल का नाम हमने रखा माई नंबर. देन एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे इंटीजर 256 का और उसको हम देन अपने वेरिएबल में इंजेक्ट करेंगे माई नंबर में. देन उसके बाद एक व्यू फंक्शन क्रिएट किया जिसके थ्रू हम जो है हमारी माई नंबर की वैल्यू जो है रिटर्न कर हम उसका जो है आउटपुट देख पा रहे थे. सो यहाँ तक ये चीज़ ऐसे काम कर रही थी. देन इफ़ वी गो बैक टू प्रेजेंटेशन, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजिबिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से कहा गया है. सो विजिबिलिटीज़ जो है 4 टाइप्स की होती है सॉलिडिटी में. पहली जो है पब्लिक विजिबिलिटी होती है. पब्लिक मीन्स के मतलब कोई भी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वेदर आप ओनर हो या फिर कोई कंट्रीब्यूटर हो, एनीवन कैन कॉल योर फंक्शंस पब्लिकली. लाइक देयर इज़ नो इशू ऑफ यूसेज ऑफ फंक्शंस. लाइक कोई भी आपका जो है फंक्शन कॉल कर पाएगा. सो या उसके लिए हम जो है पब्लिक विजिबिलिटी को यूज़ करते हैं. एंड देन और एक विजिबिलिटी होती है प्राइवेट ओनली इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो चीज़ जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होती है. देन उसके बाद और एक विजिबिलिटी टाइप होता है इंटरनल, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी होती है. एंड इफ़ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के कोई चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है सो इट कैन बी प्रेजेंट देयर टू. तो वैसे भी जो है हम majority of the time public भी यूज़ करेंगे, but as we move on advanced level we can use other type of visibilities too. And external is when someone's call a function from outside the contract. तो मतलब contract के बाहर से अगर कोई हमारा created function call करता है, so then we use external type of visibility there. And उसके बाद what is view and pure. so basically आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने जो है यहाँ पर जब मैंने ऐड नंबर का फंक्शन क्रिएट किया था वहाँ पर मैंने पब्लिक विजिबिलिटी डाली थी. ओके, एंड जैसे ही मैंने इसको
publicly मतलब public visibility डाली, then I was able to add the number into this variable. and यहाँ पर जब मैं उसको रिटर्न करा रहा था, सो गेट नंबर इस वाले फंक्शन को मैंने इसको रखा एज कि आप यहाँ पर जो है पब्लिकली, ये फंक्शन एक तो पब्लिक है, देन इट इज़ ओनली अ रीड ओनली फंक्शन जिसके लिए मैं व्यू यूज़ कर रहा हूँ, और रिटर्न्स में मैंने जो है इंटीजर 256 को कॉल आउट किया है. सो या यहाँ पर जो है व्यू एंड प्योर दो भी हमारे जो है रीड ओनली फंक्शंस होते हैं. एंड देन क्या, व्यू इज़ ओनली यूज टू सी डेटा एंड प्योर ओनली डज द कैलकुलेशन. लाइक अगर आपको दो नंबर्स का एडिशन करवाना है, सो देन यू कैन यूज प्योर instead of view. Okay, so it should work like that. And और कोई क्वेश्चन? ओके, सो फार सो गुड. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्ट्स होते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिडिटी का. स्ट्रक्ट्स आर द फंक्शंस which groups multiple types of data. Like अगर आप एक struct use कर रहे हो, you are creating a new kind of data type which stores different types of data types. Like यहाँ पर आप देखो, हमने एक struct create किया है student कहकर, and that student data type is storing a string and a unit 8. String is the name of the student and unit 8 is the roll number, for example, of the student. So struct जो है multiple values अपने अंदर store करता है of different डेटा टाइप्स. एंड स्ट्रक्ट जो है अपने में ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप की तरह काम करता है. ओके, सो लेट मी क्लियर दिस थिंग्स. परफेक्ट. सो अभी जो है हम बेसिकली स्ट्रक्ट देखेंगे, स्ट्रक्ट वर्क कैसे करता है. स्ट्रक्ट, और लेट्स क्रिएट अ स्ट्रक्ट बाय पर्सन. ओके, एंड यहाँ पर जो है there are two things to note it. okay, पहली चीज़ यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि struct में जो है हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है कंबाइन कर कर एक सिंगल डेटा टाइप में डाल सकते हैं. सो दैट्स वाई वी यूज struct. तो ठीक है, यहाँ पर इसने जो है स्ट्रिंग ऑन यूनिट 8 को यूज़ किया है, बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक स्ट्रिंग. ओके, string, and let's call it name. okay, and then I can use maybe an address, or maybe let's use a unit 256 to store some kind of value, maybe your mobile number. Okay, so you can store it like this. and struct जो है आपने क्रिएट कर लिया है जिसमें एक पर्सन का नाम और उसका नंबर, या फिर मे बी लेट्स टेक इट रोल नंबर इंस्टेड, दैट वुड बी मच अकाउंटेबल. सो या स्ट्रिंग और यूनिट 256 जो है हम यूज़ कर कर एक स्ट्रक्ट, एक पर्सन का जो है हमने डेटा टाइप बनाया जिसमें उसका नेम एंड रोल नंबर, वी आर यूजिंग बोथ ऑफ देम. ओके, एंड स्ट्रक्ट जो है ऐसे काम करता है. देन उसके बाद आते हैं हमारे पास एरेस. एरेस जो है इट्स like the list, like it can store multiple values of a data type. Like it can use maybe a 10 values or maybe 20 values, depends on you. and आप जैसे स्ट्रक्ट के आप जैसे अरे के अंदर वैल्यू एंटर करोगे, द फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन इट goes to 1 2 3 till the till how much values you store, but the first starting point is 0. From there the value gets started. So let's add a array. So यहाँ पर एक यूनिट 256 की अरे बना लेते हैं. ओके, आप यहाँ पर यूनिट 256 की एक अरे बना सकते हो. देन इसको हम पब्लिक करेंगे एंड ये अरे को एक नाम दे देते हैं, लाइक लिस्ट, ऐसे कुछ कर कर. एंड या दिस इज़ हाउ अरे वर्क्स. ठीक है, एंड हम जो है ये कॉन्सेप्ट का यूज़ कर कर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करने वाले हैं थ्रू आउट दिस सेशन. एंड नेक्स्ट उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं मैपिंग्स. मैपिंग्स कैसे काम करते हैं वो बहुत आसान है, बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. सो मैपिंग बेसिकली जो है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के साथ कंबाइन कर कर स्टोर करता है. यहाँ पर आप देखिए, सॉलिडिटी मैपिंग इज स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर दैट वर्क्स लाइक अ की वैल्यू स्टोर, similar to dictionary in Python and hash map in Java. It allows you to store and retrieve using unique keys. So
फॉर एग्जांपल मैपिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग से हमने यूनिट 256 को मैप किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है एंड देन यहाँ पर किसी का जो है मे बी रोल नंबर हो सकता है, सो दे बोथ आर कंबाइंड, लाइक दिस पर्सन रोल नंबर इज दिस और दिस रोल नंबर बिलोंग्स टू दिस पर्सन, दैट्स हाउ मैपिंग वर्क्स। सो मैपिंग का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैपिंग ओके, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रिंग एंड इज इक्वल्स टू देन ग्रेटर दैन सिंबल लगाकर स्ट्रिंग टू यू इंट 256 आप इस तरीके से एक मैपिंग क्रिएट कर सकते हो। देन इसको भी हम पब्लिकली कॉल करेंगे एंड लेट्स नेम इट एज person to number, maybe something like that. You can use it like that. परफेक्ट, सो दिस इज हाउ मैपिंग वर्क्स। यहाँ पर एक स्ट्रिंग से हमने जो है एक यूनिट 256 को जो है कंबाइन किया है एंड वी हैव नेम दैट मैपिंग एज पर्सन टू नंबर। ओके, एंड देन उसके बाद वी कैन यूज़ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है दैट इनिशियलाइजेस द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट को जब आप डिप्लॉय करोगे तब एक कंस्ट्रक्टर जो है आपसे वैल्यू मांगेगा ओनली एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, लाइक व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली कुछ नहीं है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, ओनर नेम, देन उसमें एक कंस्ट्रक्टर लगाया है जो स्ट्रिंग मेमोरी से एक इनपुट ले लेगा, लाइक स्ट्रिंग का एक इनपुट आपसे ले रहा है एंड बाई अंडरस्कोर नेम, एंड देन ओनर नेम नाम के हमने जो स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था उसमें वो वैल्यू को पुश कर रहा है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो इट वर्क्स समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी शो यू लाइव हाउ इट वर्क्स। स्ट्रिंग पब्लिक माई नेम, ओके, एंड देन हम एक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ओनर नेम यूज़ किया बट मैंने जो है माई नेम यूज़ कर रहा हूँ एंड बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग एंड और एक चीज़, स्ट्रिंग जो है अपना डेटा मेमोरी में या फिर स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपसे डिमांड करता है कि आप स्पेसिफाई करो कि उसका डेटा जो है विच काइंड ऑफ स्टोरेज में सेव होना चाहिए। सो जनरली गैस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड underscore name, then we can go ahead and update my name, okay, with underscore name like this. So चलिए अभी कंपाइल ऑलरेडी हो गया है बिकॉज हमने ऑटो कंपाइल के बटन पर टिक किया हुआ है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 0.8.19 का वर्जन चल रहा है। चलिए अभी ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर कर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दे। देखिए परफेक्टली, अगर आप यहाँ पर देख सके, लेट मी ओपन अ मैग्नीफायर, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर एक इनपुट रिक्वायर्ड है विच इज़ स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम, जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पर अंडरस्कोर नेम किया है उसी के लिए हमें जो है एक स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट करना ज़रूरी है। सो लेट्स ऐड अ स्ट्रिंग मे बी माई नेम एंड लेट्स डिप्लॉय दिस। यहाँ पर ये डिप्लॉय हो गया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू एंड अगर आप माई नेम को क्लिक कर कर देखोगे तो इसमें जो है मेरे नाम मैंने जो है एज ए इनपुट दिया था एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट वो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। सो कंस्ट्रक्टर वर्क्स लाइक दैट एंड जो है अब हम इसी के थ्रू थोड़े से फ्यू प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे एंड वन बाय वन थिंग्स को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। पहले हम जो है एक यूनिट 256 ठीक है वेरिएबल बना लेते हैं ए, ओके, और लेट्स क्लोज इट, और एक यूनिट 256 वेरिएबल बना लेते हैं बी, क्लोज इट। ओके, सो हमने जो है दो वेरिएबल्स बना लिए यूनिट 256 के। देन अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे टू ऐड वैल्यूज टू ए एंड बी। ओके, ऐड वैल्यूज एंड फ्रॉम हियर perfect. Okay, so unit 256 underscore a comma, मे भी एक काम करते हैं
नहीं ठीक है, you can do it afterwards underscore b, then यहाँ पर इसको जो है पब्लिकली मैं कॉल कर रहा हूँ. परफेक्ट. एंड पहले हम जो है a को अपडेट करेंगे, ओके, एज अंडरस्कोर a, then we can update to b underscore b. Perfect. So add values. Okay, so ये कॉन्ट्रैक्ट को एक बार डिप्लॉय कर देखते हैं. Okay, it is asking me for both the values. If I ask him 2, 3, add values, and perfect, the transaction is successful. So अभी क्या करेंगे, रिटर्न भी लेंगे. Okay, function get values, and public view returns 256. Okay, and return a. Okay, and return b. So oh shit, okay, sorry, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. आई वाज कॉलिंग टू फंक्शंस टुगेदर. ओके, परफेक्ट. सो अगर हम यहाँ पर एक बार फिर इसको डिप्लॉय करेंगे, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वैल्यू मैं ऐड करूँगा 5, then I can add another value 7, add values, and I can get the value of a as 5. Okay, and अगर मैं b को रिटर्न करवाऊँ, okay, so 1 minute, let me deploy the contract again. 3 and 4. Okay, add them, get value 4. Perfect. So this is how it's working. And अभी हम जो है एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ कर कर हमारे जो स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स है उनको ऐड कर सकते हैं. एंड इट्स 6:55, 54 now actually. Am I live? Yeah, it's 53 actually, sorry. And we will connect back at sharp 6. And then उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट भी सीखने वाले हैं आज. So yeah, let's take a break of 5 to 6 minutes approximately. All right.
ओके गाइस, वेलकम बैक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी erase all of this. एंड आई हैव जस्ट रियलाइज़ कि मैंने जो है यहाँ से जो है थोड़ी चीज़ जो है मैंने रश कर दी हैं। अगर आप उसका और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे चैट्स में बताएं, या फिर अगर आप जो है आज का जो हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट था, जो मार्कशीट था, वो अगर आप साथ में बिल्ड करना चाहते हैं तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए। वी हैव टू ऑप्शंस, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल इफ़ यू गाइस वांट, एंड if not then we can go ahead. Oh, thanks, well done Ghulam, thanks. And hey guys, anyone from Hyderabad city? Yeah, I am from Hyderabad too. Will there be a recorded session of this? Yes, it will be on YouTube live stream. Okay, so I think हमें प्रोजेक्ट ही बिल्ड कर देना चाहिए, जो कि हमारा आज का प्रोजेक्ट था मार्क्स शीट का. लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट. ओके, सो पहले मैं एक स्ट्रक्ट क्रिएट करूँगा जिसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, नेम. ओके, then I can store a person's marks in physics, maybe maths. Yeah, we can store physics, maths, chemistry. Yeah, perfect. So unit 256 to store a person's physics marks. Okay, and another unit 256 for maths, and another one for chemistry. Perfect. ओके, एंड इस स्ट्रक्ट को हम कहेंगे स्टूडेंट. परफेक्ट. सो यहाँ पर बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ पर हम एक पर्सन का नेम एंड उसके रिस्पेक्ट मार्क्स जो है स्टोर करने वाले हैं. लाइक हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे नेम स्टोर करने के लिए, एंड हम यूनिट 256 का यूज़ करेंगे फॉर स्टोरिंग द मार्क्स. ओके, और ऐसे ही करके हम जो है एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जहाँ पर we can use certain criteria to fulfill, like if you want to pass out in every subject you need to cross maybe 35 marks, and in total you need to get at least 150 marks. So ऐसा हम जो है आज एक फंक्शन एंड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है अरे में भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट. लाइक हमने जो स्ट्रक्ट बनाया है उसको हम एज एन अरे यूज़ करेंगे. ओके, student, and that is an array, okay, which is public, and we can call it, क्या कॉल करें इसे, लिस्ट बुलाएं, क्या बुलाएं? आई थिंक एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स में ही थोड़ा सा स्टूडेंट हमने यूज़ किया था ना, तो अभी हम इसको स्टूडेंट्स कर देते हैं. that would be easier. Okay, and let's start creating a function to add all the values to it. Okay, function add values. ओके, एंड यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यूज़ लेंगे. ठीक है, पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे लाइक अंडरस्कोर नेम, देन उसके बाद हम एक यूनिट 256 लेंगे बाय अंडरस्कोर phy for physics. Okay, and we are going to use short forms.
ओके, एंड वैसे ही एक यू इंट 256 लेंगे अंडरस्कोर मैथ and auric int 256 for chemistry. Perfect. So what we have done so far is हमने एक फंक्शन बनाया जहाँ पर हम जो है वैल्यूज ले रहे हैं फ्रॉम द यूज़र. ओके, एंड what we can do now is we can push these things into the array which we have created. Like here, यहाँ पर हमने जो array बनाया उसमें हम जो इसको push करेंगे. उसके लिए पहले हमको जो है array के अंदर जाना पड़ेगा एंड फंक्शन को पहले पब्लिक विजिबिलिटी दे देते हैं. देन लेट्स गो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. परफेक्ट. ओके, एंड स्टूडेंट ओके डॉट पुश. ओके, तो पुश बेसिकली हम यूज़ करते हैं एनी काइंड ऑफ वैल्यू को जो है अरे में पुश करने के लिए. ठीक है, सो हम जो है स्टूडेंट्स की अरे में जो है अपने वैल्यूज़ पुश करने वाले हैं एंड दैट टू विथ सर्टेन वैल्यूज़ जो हमने स्ट्रक्ट में बनाए हैं. सो पहली चीज़ तो हमने जो हमारी अरे का नाम है वो स्टूडेंट्स रखा है, नॉट स्टूडेंट, एंड लेट्स पुश इट inside our struct by name student. Okay, and student is the name of the struct. Then inside that we can add a name, then we can add underscore phy, then we can add underscore math, then we can add underscore chem. So yeah, ओके, सो ये चीज़ जो है हमें ओके यहाँ पर स्ट्रिंग पब्लिक या हमने जो है यहाँ पर स्ट्रिंग को जो है स्टोरेज का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया. इसके लिए वो एरर शो कर रहा था. रिमेंबर टू पुट एन ऑप्शन एज मेमोरी. ठीक है, एंड इट्स वर्किंग perfectly fine till here. Let's compile. Yeah, it's already compiled. So let's try to deploy this thing and check if everything is working fine. Yeah, add values. Okay, let's add some demo values. Then after that 45, 67, 87, add values, and perfect. It's showing me that on 0 we have a person with string name Ghulam, and he has scored 45 in physics, 67 in maths, and 87 in chemistry, something like that. And if I add more values, let me pick some of the names from the comments. Muzammil, yeah, let's add Muzammil. Okay, and let's push your marks. So let me change it to 95 and 87 and 97 maybe. Yeah, let's add the values. And okay, so here if I want to check, if I hit 0 and check this option, I'm still receiving my values, because in the array which we have created by the name students, array starts from 0. At the point 0, uh, the values have been stored for Ghulam, who has scored 45, 67, and 87. But if I want to check the values for Muzammil, I need to update the index, and I'm going to write 1. And yeah, I can see the values of Muzammil now. Muzammil and physics 95, 87, and 97. Let's add another person maybe. Let me pick another name. Noor. Okay, perfect. So अगर अभी इसको ऐड करेंगे, then if we call number 2, you can see Noor and 95, 97, 97. So this function is working perfectly fine. Now what we need to do is we need to perform some certain calculations, like some certain conditions, like if you have scored this much marks, then you are passed and something like that. So उसके लिए हम boolean यूज़ करेंगे. ठीक है, जो कि बताएगा कि आप पास हो या नहीं.
ठीक है. So let's go ahead and let's create another function. And this time I'm going to name it get students. Okay. और यहाँ पर बेसिकली वी कैन यूज़ एन इंडेक्सिंग सिस्टम. लाइक ये इंडेक्स पे आपको इंडेक्सिंग मीन्स अरे में कौन सी पोजीशन पे हमें नाम चाहिए वो हिसाब से हम इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट वी कैन यूज़ इंडेक्सिंग सिस्टम या इनटू 56. ओके. एंड हम इसको यूज़ करेंगे एज नम. आई थिंक आई हैवंट यूज नम एनीवेयर. या सो या चलिए देन उसके बाद विजिबिलिटी पब्लिक होगी एंड we are viewing and returning a lot of values. So returns में यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है देखने की ज़रूरत है. public view returns. एंड यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है. लाइक पहले तो हमें स्ट्रिंग चाहिए जो हमारा नेम है. ओके. देन उसके बाद वी नीड यूनिट 256 जो हमारे मार्क्स है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. लेट मी कैलकुलेट हाउ मच यूनिट 256 आर रिक्वायर्ड. 3 फॉर 3 मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 3 एंड देन अनदर वन फॉर अवर इंडेक्स. ओके. एंड एक बूलियन भी चाहिए. सो उसके लिए लेट्स पहले तो स्ट्रिंग को जो है हम एक डेटा जो है हमें इसको एक स्टोरेज फैसिलिटी देनी चाहिए. लाइक इसकी स्टोरेज जो है मेमोरी में स्टोर होने के लिए. देन लेट्स ऐड अनदर 3 unit 256. Okay. And another unit 256. So this is done for maths, physics and chemistry. Now we need to add another unit 256 to return the value of index. Okay. 3 a minute. Let's go. So unit 256 for index and at last एक boolean भी चाहिए because we need to display whether the thing is true or false. Let's go. Perfect. Abhi inside the function let's add our logic. So basically हमारा logic हमें जो है बिल्कुल सिंपली एक रूल बनाना है कि टोटल मार्क्स जो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मिलाकर है दैट शुड बी 150 एंड एवरी सब्जेक्ट शुड कैरी नॉट लेस देन 35 मार्क्स. अगर ऐसा होता है सो देन यू आर फेल्ड इन दैट केस. सो उसके लिए अगर फेल होते हैं सो देन बूलियन विल रिटर्न अ फॉल्स एंड इफ यू आर पास देन बूलियन विल रिटर्न अ ट्रू. सो उसके लिए हम जो है एक नया वेरिएबल बना लेते हैं. ठीक है. और उसमें हम जो है इंडेक्सिंग करेंगे. स्टूडेंट एक मेमोरी वेरिएबल बना लेते हैं जो कि s रहेगा. ओके. देन इसके अंदर जो है हम वी कैन यूज़ हमारी जो स्टूडेंट्स की हमने जो अरे बनाई थी जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर के नेम्स एज एन इंडेक्स. सो अरे को जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके अंदर वी कैन ऐड इंडेक्सेस बिकॉज जो फंक्शन के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं दैट इज ऑन इंडेक्स. ओके. एंड this is okay. So we are not calling the index, actually we are calling the num. Perfect. And there is an error. Let's see. Warning unnamed return. Okay, unsigned. Okay, no problem. Let's keep adding the code so that it would get perfectly. Okay. So uint 256 एक और बना लेते हैं ताकि हम जो टोटल मार्क्स डिस्प्ले कर पाएँ एंड दैट शुड बी इक्वल टू ऑल सम ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. ओके. ठीक है. सो जो हमने हमारा स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्ट था उसके मेमोरी से हम जो है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के वैल्यूज लेंगे. ठीक है. सो एस डॉट मैथ okay, then we can get s dot physics. I hope yeah the values are same but the first initial letter is capital, I think so. Yeah. Okay. And we need to add all 3 of them, so that's the main thing. Maths, physics
maybe at s dot chemistry. Perfect. 7 compilation errors, but don't worry, we will solve them one by one. ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया है। अभी हमें लॉजिक और बूलियन को जो है रिप्रेजेंट करना है, और बूलियन की स्टेटमेंट हमें बहुत आराम से लिखनी है, क्योंकि बूलियन पास तभी होगा जब जो है टोटल सम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 150। सो बूलियन, ओके, PSSCD पास्ड, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हेन द टोटल यानी यहाँ पर जो हमने यूनिट 256 बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। टोटल should be greater than or equal to 150 marks, okay, और perfect। अगर ऐसा होता है तो then it's true, okay, and हमें जो है now every subjects के लिए हम क्या limitation लगा दें? Should we add limitation to every subject? Like 35 marks should be at least in each subject. What do you guys say for that? 35 marks, ठीक है, चलिए लगा ही देते हैं limitation. So and 35 marks should be there for each subject. So what we can do is we can basically यहाँ पर जो हमने math की value रखी थी s math की s dot math, that should be greater than or equal to 35, एक condition ये लग गई, okay, and same goes for physics and chemistry, ठीक है, same goes for physics, and s dot physics, it should be greater than or equal to 35, and s dot chemistry should be greater than or equal to 35. Perfect. Let's return the values now. I think यहाँ तक हम perfectly जा रहे हैं. Let me revise once. हाँ, perfect. तो अभी हम return कराएंगे values को. That's it. Okay. So let's return the values now. S name. Okay, यहाँ पर जो struct में हमने name रखा था वो लिख देते हैं S name. Okay, ये एक value हमने return करानी है. Then एक s dot maths, एक s dot physics, okay, then एक s dot chemistry, okay, then हमें boolean भी पास कराना है कि passed, okay, and total भी अगर हम निकाल लेंगे तो वो अच्छा होगा रिटर्न में। टोटल यानी जो हमारे कंप्लीट मार्क्स थे इंक्लूडिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, एंड विद अ बूलियन 2। तो बूलियन हमने जो है बूलियन क्रिएट किया था बाय द नेम पास्ट, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं परफेक्ट। एंड या सी देयर आर नो एरर्स नाउ एंड यू हैव रिटन दिस फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ एक्सेप्शनल कोड। यहाँ पर हमने थोड़े से लॉजिक्स भी यूज़ किए एंड वी हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मार्कशीट कहकर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देन उसमें हमने एक कस्टम डेटा टाइप बाय नेम स्टूडेंट बोलकर क्रिएट किया है। उसमें से हमने जो है एक स्ट्रिंग रखा बाय द नेम, देन हमने 3 वैल्यूज़ दिए हैं यूनिट 256 के, जहाँ पर एक स्टूडेंट अपने मार्क्स डाल सकता है रिगार्डिंग ईच सब्जेक्ट। Then we have created an array by the name by the name students, and this array contains our struct student values in it. So यहाँ पर पहले हमने जो एक फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यूज ऐड करेगा वन बाय वन। सो यहाँ पर string memory underscore name, it is taking name and input from the user, okay, then 256 for physics, unit 256 for max, unit 256 for chemistry. It is taking 4 inputs from the user, one is string and 3 are unit 256. It's a public function. Then what it does is it pushes the value of the inputs into our array and struct, okay.
So here is our array. Then we are using push command to push the values inside struct by name student, and inside that we are going to push them one by one: string, then physics, then maths, then chemistry. Then we are using a function. We are creating a function by name get students. Here we are taking unit 256 underscore num as an input. Okay, and public view returns, and we are going to return string which will be name 256 maths, 256 physics, 256 chemistry, and another unit 256 for the total. And we are returning a boolean which should display true or false if the code if the particular student have passed or not. We are using boolean for that. Then in student, we are using a memory s, okay, which will put the which is going to put the input which the user have provided in the array name students. Then we are going to display the total marks like including maths, physics and chemistry. ये सारे मार्क्स जो है हम डिस्प्ले करने वाले हैं. देन उसके बाद हमने जो है बूलियन बनाया है एक पास्ट कहकर, जिसमें टोटल मार्क्स अगर 150 से ज़्यादा है एंड मार्क्स ऑफ मैथ्स जो है 35 से ज़्यादा है, फिजिक्स के 35 से ज़्यादा है, इन केमिस्ट्री के 35 से ज़्यादा है, सो देन दिस बूलियन विल बी ट्रू. ओके, एंड हम रिटर्न कर रहे हैं ऑल द वैल्यूज, मतलब सारे वैल्यूज को जो है एक साथ रिटर्न करने वाले हैं विथ नेम, विथ मैथ, ओके, एंड विथ फिजिक्स, विथ केमिस्ट्री एंड टोटल मार्क्स एंड विथ द बूलियन. ओके, सो लेट्स डिप्लॉय दिस कॉन्ट्रैक्ट हियर. और यहाँ पर हम जो डिप्लॉय कर रहे हैं दिस इज़ ऑन अ वर्चुअल मशीन, मतलब ये इनबिल्ट होता है रिमिक्स की आईडीई में. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव वन ऑफ अवर वी हैव अ लॉट ऑफ अकाउंट्स एंड वी आर यूजिंग वन अकाउंट जहाँ पर 99.999999536 समथिंग ईथर रखे हुए हैं. ओके, एंड ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. लेट्स डिप्लॉय इट. ओके, लेट्स डिप्लॉय इट नाउ. परफेक्ट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव द वैल्यूज. पहले हम जो है वन बाय वन कर वैल्यूज ऐड करेंगे. फर्स्ट विल बी माय नेम, ओके, देन second value will be my physics marks, so let me add 45, let me add 34 in mathematics, and let me add 78 in chemistry. Okay, so if I calculate them, 45 plus 34 plus 78, we are getting 157. Okay, let's add this value. Okay, and let's add where the position of the student in the string get student. So yeah, it has declared about all the values: my name, my marks, okay, physics, chemistry, physics, maths and chemistry. Then the total 157, but the boolean states false. Why false? Because why it is showing false? Because 157 is greater than 150, it should say true, right? But no, there is a problem. We have added a condition here that in every subject the student must score above 35 marks. And here in mathematics, I think so, no, in physics I have scored 34, which is not a good thing. So it is showing false and I have failed this examination. Okay, let me add another person. Okay, let's add his marks. Okay, 87. Add values, and this person is at the location of 1. Okay, Muzammil 78, 99, 87, and the total is 264 marks, and the boolean is displaying true. So that means this person has been passed in the examination. So we have created this complete mark sheet contract. Okay, and I hope each and every concept we have covered here, like structure, arrays. Yeah, we can do another example if you want in mappings, and or else we can proceed towards deployment. You are using Patrick Collins courses and spamming Cyfrin Updraft. Sorry, I didn't get that.
Okay. Yeah, because Cyfrin Updraft is created by Patrick Collins. So I think sharing his resources is a good option. Okay, so let's do the deployment for that thing. So for deployment, we require a wallet to transact with our smart contract. Okay, so we are going to use MetaMask, and I have added the extension of MetaMask. If you want, you can go and type MetaMask on any of the browser that you are using, and make sure that you use this link metamask.io, because there are a lot of another spammy and scammers emails. So okay, click on get MetaMask, and yeah, it will redirect you here, and I already have MetaMask installed. Okay, let's add MetaMask here. Perfect. So let's get started. I agree to MetaMask, and let's create a new wallet. Make sure you read each and everything. See, private clicks and views on the apps are stored, but on other details like public addresses are not. General, we are temporarily use your IP address to detect and general location like your country or region. An optional, if you decide you want to share or delete your usage data via settings anytime. Okay, we'll use this data to learn how to interact. Sure. So make sure that this should be personal, because I'm creating a demo MetaMask wallet for purpose of teaching, but you need to make sure that you never share your password private keys with anyone. So yeah, make sure you store them very secretly. Okay, I'm creating a demo thing. Perfect, I understand MetaMask cannot recover password for me. Make sure that you store your password at a very secure location. Okay, let's create a new wallet. Secure your wallet. Make sure to see this video. Make sure you never share your secret recovery phase, because this is the main thing of your wallet. On this, all of your accounts are based. Make sure that you never share your secret recovery phase with anyone. किसी को भी अपना सीक्रेट रिकवरी फेस मत देना. 12 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड वो एज अ मास्टर की एक्ट करता है आपके वॉलेट और फंड्स के लिए. नॉट इवन मेटामास्क की टीम आपसे पूछेगी कि आपका सीक्रेट फेस. मेटामास्क की टीम कभी आपसे आपका सीक्रेट रिकवरी फेस नहीं पूछेगी. सो या, अगर कोई आपसे आपका सीक्रेट रिकवरी फेस पूछता है, सो इट्स लाइकली अ स्कैम. ओके, तो ओके, लेट्स reveal my secret recovery phase. Perfect. Let me recover it first. Okay, so let's take a screenshot.
Again, I am saying this because I am using this wallet only for learning purposes. So I might share my details, but you must keep your secret recovery phase very much secure because your complete wallet and funds depends on it. Let's verify it. Okay, and it's here. Perfect. Let's confirm. Done. Perfect. Now MetaMask has been added to our Firefox as an extension, and it is connecting me to the Ethereum mainnet. Any questions for me? Let's close some of these tabs. Boom, here is my MetaMask wallet. Okay, so we are currently on Ethereum mainnet. This is your chain on which you are using, and here make sure you enable this option. So first go to your chain selection, your network selection, then make sure that you select show test network. Okay, then make sure you select Sepolia. So for the deployment process we are going to use Sepolia testnet. Okay, and it's loading. If you want to add multiple accounts, you can add two in MetaMask. Like for example, I can add another account. Okay, create a new account by some other name, maybe learning. See, here is the new account, and this is our wallet address. Okay, it's like a unique address for each and every wallet. And there are two main things in every wallet. First is the wallet address, and second is the network. This, if someone knows about these two things, then they can transfer or interact with your wallet, but they can't like use your funds or etc. Make sure you never share your private key or secret recovery phase or even password with anyone. Okay, and here is the Sepolia 8. To deploy we need some kind of Ethereum in our account, because if you can see in the remix panel, okay, you can see that here this account it were supposed to have okay, let's do one thing. This account was supposed to have 100 ethers, यानी इसमें पहले somewhere around 100 इथीरियम कुछ थे. देन हमने थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए, और जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और गैस फीस के चलते इसने हमारे थोड़े इथेरियम डिडक्ट कर लिए. ओके, लेट्स चूज अनदर अकाउंट एंड ट्राई टू डिप्लॉय द कॉन्ट्रैक्ट. आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 100 इथेरियम है, एंड अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, सी इट हैज़ बिन डिप्लॉयड, और यहाँ पर जो हमारे 100 इथेरियम थे दैट इज चेंज टू 99.99999 समथिंग. तो अब समझते हैं गैस होती क्या है. गैस बेसिक टर्म्स में कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रन करने के लिए काम में आती है. यहाँ पर आप देख सकते हो 651191 गैस हैज़ बिन कॉस्ट फॉर दिस डिप्लॉयमेंट टास्क. ओके, और बेसिकली इसने जो है हमारे कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया है इन द फाइल टाइप एंड हैज स्टोर्ड इन अवर इनटू द ब्लॉकचेन. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से फंड्स हमारे इस डेमो अकाउंट में डालेंगे, और उसी के लिए हम गिटहब रिपो यूज़ कर सकते हैं. अनदर थिंग, आई एम एम्बेसडर एट Cyfrin Updraft एंड आई हैव द अथॉरिटी टू यूज़ दिस गिटहब रिपो फॉर लर्निंग एंड टीचिंग पर्पस. ओके, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंडेड टेस्टनेट इज सिपोलिया, एंड हमने जो है ऑलरेडी सिपोलिया को जो है ऐड कर लिया है हमारे वॉलेट में. देन हमें फॉसेट्स चाहिए. अभी फॉसेट्स क्या होते हैं, फॉसेट्स जो है एक फेक अमाउंट ऑफ, एक फेक काइंड ऑफ इथेरियम जैसा एक रेप्लिका होता है, जो वर्क एज ए इथेरियम करता है, बट इट इज़ ओनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस. ओके, अगर हम यहाँ पर
फॉसेट के लिए मैं अगर आपको कहूँ, सो द बेस्ट लिंक वुड बी the Google one, or you can use Chainlink one also. It is also the best platform to get the faucets. But yeah, I'm going to use the Google one because it works for me. Okay. Just taking some time. Perfect. So आपको मैं बता दूं, 1 मिनट। यहाँ पर आपको ये वाली जो गिटहब रिपो आई थिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दी है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, yeah, I think I have shared that GitHub repo, but because they are links, it is not showing up here. ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखो, URL आप देख लो, github.com/cyfrin/foundry full course cu, ओके, एंड इट्स अ पब्लिक रिपोजिटरी, ओके। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, आने के बाद टेस्टनेट फॉसेट्स पे आओगे तो यहाँ पर आपको मेन सेपोलिया की जो गूगल क्लाउड की लिंक है वो मिल जाएगी। एंड आई रिकमेंड यूजिंग गूगल क्लाउड बिकॉज ये जो है बहुत आसानी से वर्क करता है व्हेन कंपेयर टू अदर वंस, क्योंकि थोड़े टूल्स कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 0.001 इथेरियम मिनट पे रहने चाहिए बिकॉज टू स्टॉप स्कैमर्स और स्पैमर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द टेस्टनेट फंड्स। ओके, सो वॉलेट एड्रेस में डाल देता हूँ, बट आई थिंक इसके लिए मुझे गूगल पे लॉग इन रहना चाहिए। Here is our metamask. Let us copy this address and ये एड्रेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। When I hit the receive, okay, you are signed out. Okay, no problem. So मैं मेरे गूगल अकाउंट से फंड कर देता हूँ अपने वॉलेट को। ओके, योर टेस्टनेट टोकन्स आर ऑन द वे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे अपना वॉलेट एड्रेस डालोगे देन रिसीव 0.02 सेपोलिया ईथ कर एंटर कर दोगे, यू शुड रिसीव द सेपोलिया ईथ। ओके, perfect, the drip has been complete and I have received the transaction has on my Google, and I think, yeah, see here we got 0.05 sepolia eth into our learning account। and यहाँ पर थोड़े से बेसिक चीज़ हम करेंगे, ठीक है। हम इसको हमारे जो है फर्स्ट अकाउंट में सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये नेटवर्क फ़ी ले रहा है ऑफ $1.4 विच इज़ 0.0008 सेपोलिया ईथ फ्रॉम, बिकॉज वो हमारे लर्निंग अकाउंट से अकाउंट 1 में जो है इथेरियम सेपोलिया ईथ को ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड हमने ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म कर दी है, इट्स पेंडिंग एंड इट्स कंफर्म्ड, ठीक है। मतलब एक जनरली 0 सेपोलिया ईथ का जो है हमने ट्रांजैक्शन सेंड किया है। हमने इथेरियम सेंड नहीं किया है, बस टू जस्ट मेक श्योर कि इथेरियम कट रहा है व्हेन वी ट्राई टू इंटरैक्ट विद आवर कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो है एक डेमो चीज़ वो की है। एंड अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो मेन अकाउंट है उससे हम हमारे वन अकाउंट में, या फिर छोड़ दीजिए, हम अभी हमारे यही अकाउंट में जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 0.00491 सेपोलिया ईथ। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जो हमारा रिमिक्स का पैनल है यहाँ पर, ओके, परफेक्ट। यहाँ पर आने के बाद डिप्लॉयमेंट के ही टैब में आपको रिमिक्स वीएम कैनन की जगह आपको यूज़ करना है इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क। अगर वो ऑप्शन आपको ना दिखे तो आप कस्टमाइज द लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, ओके। एंड ऐसा करने के बाद यू शुड सी एन ऑप्शन ऑफ इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क। रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि मेटामास्क हमने अभी जो है एज एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, ओके। एंड वेयर इज my contract, here it is, let me close this and let's copy this thing, perfect, let's refresh।
Okay, here is our contract and it's compiled. Let's check. या सी अभी हमें एक ऑप्शन दिख रहा है इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क का, इस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर ये कहेगा कनेक्ट विथ मेटामास्क. ओके, सो लेट्स कनेक्ट. परफेक्ट. सी इट इज़ कनेक्टेड और अकाउंट्स में ये हमें दो ऑप्शंस, अभी तो एक ही ऑप्शन दे रहा है बिकॉज उसी में ही हमारे पास सिपोलिया ईथ है और अमाउंट ऑफ सिपोलिया ईथ भी बता रहा है कि 0.0491. ठीक है. एंड अभी हम मेन नेट पे हमारा जो है मार्कशीट का कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय करने वाले हैं. लेट्स गो अहेड. डिप्लॉय एंड मेटामास्क ओपन होगा एंड इट इज सेइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम रिमिक्स डॉट इथेरियम org to deploy a contract. Okay, and it is costing us $48 as network fees. No worries. Let's confirm the transaction. Creating of mark sheet is pending. It's taking some time. You can use perfect. See, I've get a confirmation that the transaction has been successful, and you can check about this transaction or sepolia.etherscan.io, क्योंकि यहाँ पर इस वेबसाइट पर each and every detail of the transaction आपको मालूम हो जाएगी. यू कैन यूज़ द लिंक. ठीक है. इट्स sepolia.etherscan.io. लेट मी शेयर दिस इन द chat. Perfect. So you can see the transaction hash. Okay, and the status is successful and 2 blocks confirmation. Okay, and here is the timestamp 23 seconds ago, May 6, 2025 at 11:24 UTC. From this wallet address to this contract address. Okay, 0 Ethereum and transaction fee is 0.02 Ethereum. Gas price is 43 GEO. So GWEI GEO. How this thing works वो भी मैं आपको बताऊंगा. Gas limit and usage by transaction. ओके, ये जो हमने लिमिट्स रखी थी गैस की यहाँ से उसको कह रहा था. ओके, इट इज सेइंग अबाउट दैट. देन here is the input data what we have sent to the blockchain. Okay, देखिए बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा है. परफेक्ट. एंड अगर हम अभी इसके साथ जो है इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सम जनरल वैल्यूज. देखो, लाइक अगर हम इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, सो अगेन मेटामास्क इज गेटिंग पॉप्ड अप एंड इट इज सेइंग टू ट्रांसैक्ट टू update these values into the smart contract. So let's confirm this change and it's loading. Transact to mark sheet. Okay, add values. So हम values add कर रहे हैं. Perfect. Confirm transaction. And अगर हम यहाँ पर आए अभी and इसको refresh करें, यहाँ पर आप देख सकते हो call method by 23 seconds ago. और here is the same thing which we have seen here on Etherscan. Okay, 2 minutes ago. ये तो time of deployment है, but हमें मालूम करना है कि transaction hash क्या है. So let's copy the transaction hash and let's go to etherscan.io. Okay, यहाँ पर transaction hash paste कर search करेंगे. सी यहाँ पर कह रहा है कि कॉल किया था इस कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, बाय दिस वॉलेट एड्रेस. ओके, एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन हैश. 3 blocks कंफर्मेशन 1 minute अगो हमने जो है वैल्यूज ऐड किए थे. देन अगर यही वैल्यूज को अभी हमें व्यू करना है, सो देन वी कैन व्यू इट. ओके, 0. then I can see my values here and the call function has been created but it has not cost us anything. and अगर मैं अपडेट करता हूँ
like maybe I can change the name. Maybe 76, 78, ओके नहीं 98 और 86 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है एज ट्रांजैक्शन सेंड करेंगे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हम वैल्यू सेट कर रहे हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सो देन अगेन इट्स कॉस्टिंग अस सम अमाउंट ऑफ इथेरियम। लेट्स कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन and it is saying transact to mark sheet, add values is pending. It will take us some time and perfect is it has been done. And अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर कर ईथर स्कैन पर देख सकते हो कि आपका जो ट्रांजैक्शन हैश है उसके थ्रू भी आप जो है देख सकते हो। अभी जो है ये इंडेक्सिंग पर है, ओके। इसको सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर सक्सेस। सो अभी जो हमने ट्रांजैक्ट किया था ब्लॉकचेन से, लाइक हमने जो वैल्यूज ऐड की थी मुजम्मिल 86, 98 एंड 95, दैट हैज़ बीन एडेड टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी, फन कहकर गेट स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो या यू कैन सी द अपडेटेड थिंग। सो या दिस इज हाउ द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस वर्क एट सेपोलिया टेस्टनेट एंड वी कैन डू द सेम थिंग फॉर zk sync, ठीक है। अगर आपको zk sync पर डिप्लॉय करना है सो देन यहाँ पर आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा, chainlist.organization, chainlist.org, and we put it in the chat box. I think it's not supporting the links. Yeah, it's not supporting the links. I don't know why. Okay, so chainlist.org, go on to this website and zk sync mainnet, and make sure to click this checkbox because we are working on test nets because we are learning currently, okay। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो zk sync सिपोलिया टेस्ट नेट, ओके। ये हमें जो है कनेक्ट करना है अपने वॉलेट से एंड इज आस्किंग अस टू कनेक्ट विद मेटामास्क, ओके परफेक्ट। सी योर अकाउंट्स एंड सजेस्ट ट्रांजैक्शन, यूज योर एनेबल नेटवर्क कनेक्ट, ओके। एंड नेटवर्क यूआरएल ये है, देन करेंसी सिंबल इथेरियम है। लेट्स अप्रूव दिस थिंग and let's go to our metamask. Perfect, see now it has been shifted to zk sync sipolia testnet, but अभी हमारे पास zk sync sipolia testnet में जो है जीरो अमाउंट ऑफ ईथ है, ओके। सो अभी हमें क्या करना होगा कि हम एक काम करते हैं, हमारे जो मेन अकाउंट है इसमें हम थोड़े से फॉसेट्स और ले लेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। टेस्ट फॉसेट्स अगर हम इसमें ले लेंगे सो देन we can transfer it to our zk sync chain, transaction hash is pending, perfect। I think I should receive some amount of Sepolia ETH into my MetaMask account 1. Let's change it to test network Sepolia. Yeah, perfect। So now we need to transfer this to our zk sync Sepolia testnet. For that, you can go to portal.zksync.io, okay, and this is the ether scan one, okay। So go to portal.zksync.io, okay, let me show you from scratch। It's loading। Then you can go to bridge, if you can see here, and make sure you connect your wallet, connect MetaMask, and make sure to read the details, connect। Perfect, now we can see, and make sure
you select the zk sync Sepolia testnet. Okay, and I have connected my wallet. It's taking some time to load. 9c. Okay, my account one is using the 9c one. Let me go to Sepolia. Perfect. So I can maximum transfer 0.038, no problem. Let's transfer the exact amount of Ethereum. 954. Okay, to zk sync Sepolia testnet. Perfect. Okay, change wallet to Ethereum Sepolia testnet. Yeah. Continue. So it will take approximately 15 minutes of time to bridge, and it will ask for our confirmation. Sure. Till that time, we can talk about the difference between Ether, V, and GU. So, okay, I think it's done now. No, it's taking some time. Ethereum unit converter, perfect. So here you can see one Ethereum is equal to 1 and 9 zeros Q, okay, which is somewhere around 1 billion, okay, which is somewhere around 1 billion Q, okay, and one with the power of 18 zeros, one with trailing 18 zeros is the quantity of view, and that is 1 Ethereum. So currently 1 Ethereum is priced at 1818. Then 1818, if we perform a calculation, this is the life price of Ethereum. One eight 18.12. Okay, 1818.12 divided by, it's 1 billion. So yeah, 1818. It's taking 550 something. Okay, so let's check if the bridge is successfully done. As you can see, the amount has been deducted from our main account with Sepolia network. If we see Sepolia, zkSync Sepolia testnet, yeah, it has been added here. I think the bridge is complete. Yeah, perfect. So now let's add option, I mean a plugin of zkSync. To our Remix IDE. Let's close the unwanted windows. Perfect. So as you can see, there is an option to
this option of zk sync plugin. Okay, and we need to select wallet, connect wallet, MetaMask, and it will pop up. Let's connect it, and we are connected. Okay, make sure our contract should be inside contracts folder. Created a folder, and maybe copy this thing inside this folder. Okay, perfect. So it's now inside the contract folder. Yeah, compile project. Okay, yeah, perfect. So the it has compiled our contract. Here is the file, and let's deploy it on zk-sync testnet. Okay, you can click on verify contract if you want, but I'm going to deploy it, and Ethereum is going to ask us to signature this request. Let's go. तो यहाँ पर परफेक्ट हमने जो है डिप्लॉय कर दिया है zk sync पर, एंड यहाँ पर हमें वैल्यूज पूछ रहा है. लेट्स ऐड सम डेमो वैल्यूज टू ट्रांजैक्ट. ओके, गेट स्टूडेंट्स, ऐड वैल्यूज, एंड यहाँ पर ये अगेन ट्रांजैक्शन के लिए बोल रहा है कंफर्म. परफेक्ट, वैल्यूज हैज बीन एडेड. नाउ लेट्स सी. देखिए यहाँ पर इन द टर्मिनल इट इज रिटर्निंग द वैल्यूज. ठीक है, 67, 87, 35 एंड ट्रू. ठीक है, अभी मैं काम करूँगा कि मैं एक रैंडम नाम ले लेता हूँ, एंड let's try to add this values again. It is asking us for transactional access. चलिए, एंड ये भी ऐड हो गए हैं. देन अगर अभी 1 पर क्लिक कर कर गेट स्टूडेंट्स दबाऊंगा, सो या यू कैन सी इट हैज़ रिटर्न द वैल्यूज. मतलब ये जो वैल्यूज हमने इसको प्रोवाइड किए थे और जो अरे में नंबर 1 पर था, इसने वो रिटर्न कर दिया है. ओके, और यहाँ पर हमारा जो हैश है वो भी दिया हुआ है, एंड वी कैन कॉपी दिस हैश. और अगर इस ट्रांजैक्शन के बारे में हमें डिटेल्स जानने हैं तो वी कैन कम टू sepolia.explorer.ckSync.io. ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यू कैन जस्ट ऐड द ट्रांजैक्शनल हैश. ओके, एंड it is taking a bit of time. Okay, let's see. Process sending. This is the transaction hash, and it's the block ID batch number from the wallet address to here, and data here, input data and value 0 Ethereum. Fees is 0.000170019 Ethereum, and yeah, gas per pub data, and received 2 minutes ago. So we have successfully deployed our smart contract on zk sync and on Sepolia, both of the test networks, and we have built a basic kind of contract which displays the status of failure and passing examinations of a student, और वही चीज़ को हमने जो है डिप्लॉय भी कर दिया. परफेक्ट. आई थिंक अगर अभी आपके लिए आपको मेरे लिए कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. और मेक श्योर करिए कि आप जो है साइफ्रिन अपड्राफ्ट के सारे कोर्सेज फॉलो करें. ठीक है, ब्लॉकचेन बेसिक्स, देन सॉलिडिटी 1-on-1, उसके बाद फाउंड्री 1-on-1 है, देन एडवांस फाउंड्री.
ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने 2 आवर्स का सेशन कर लिया है, बट मेरा प्लान ये था कि मैं आप लोग को जो है और एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अबाउट द गेटिंग रियल वर्ल्ड डेटा, ठीक है, यूजिंग चेन लिंक। और हम मे बी एक फंड में वॉलेट बनाते जैसा पैट्रिक कोलिंस ने अपने सॉलिडिटी 1-on-1 कोर्स में बनाया है, वैसी कोई चीज़ हम भी बनाते, बट that would require a good level of understanding and that would require a much more time. So already it's 2 hours, I think so. We have started at 6 and it's 8 p.m. now. Yeah, sure. अगर हम next session में मिले, so then we can focus on that thing. Then after that, we can start building on Foundry. Okay, and that's it for the session, guys. I hope you all enjoyed. अगर आपको कोई सवाल है मेरे लिए तो आप पूछ सकते हो. Thank you. Thanks a lot. Make sure you attend all the upcoming sessions. And I think you guys have a Luma form to register for the upcoming events of Cyfrin Updraft. Stay connected with the best learning platform for Web3. And I think that is for the session. We will continue in the next session. All right. Take care. Bye bye.